Hi everyone, my name is Mehajarwa. Today I'm in Apana Art Gallery. So I'm going to take you a show round of the show. It's called Under the White Sky, and today is the World Environment Day, and today is 5th of June. So I'll be uploading by the time you see the show. The World Environment Day will be gone, but still we can celebrate the World Environment Day every day. Doesn't mean today is not a World Environment Day, doesn't mean we can't celebrate the nature. We can save the nature, we can celebrate the nature every day. So guys, I'll take you for a show round. Please join me at Artraaga. The show begins right now. Very good evening, Mr. Alfonso. Would like to say something about the show that happened in Apana Fine Art Gallery today. So how was the show and how was the experience, sir? No, I mean it's fantastic. Anything that is, of course, organized in Aparna's gallery has to be amazing because both she and her mother Ajit have been so committed to humanity, committed to the universe, committed to the planet, and committed to all good causes. I mean, I'm here because they are great people. They are good people. When I say great, I mean good people. They are some of the few good people left on the face of the earth, and they try to sell goodness, of course, through various means. Through, of course, Ajit does through writing, and of course, Aparna does it through her paintings. And I think this is a fantastic message on World Environment Day. Frankly, I think the end is near. I think the human species is not going to survive for a long time, and the faster we disappear, I think it's good for the planet, good for the universe, and so let's live happily. The last few years, moments we have, I think. A reason to live happily, and I hope Aparna and the team and the curators and everybody come together and spread as much happiness as we can, because I don't think we can save the planet anymore. I'm very skeptical. So why so pessimistic view about the Mother Earth, sir? Because we have wrecked Mother Earth in every way. Look at the amount of pollution that we are pumping into the air, into the water, into the soil. And I don't think humanity is in a position or has the will to do it. No, they don't have the will to do it. They'll meet every few years. They will issue a communique with the beautiful statements, but I don't think anything great is going to happen. Though the Indian government has, over the past couple of years, has taken some dramatic steps, like making a commitment that we're going to be net zero by 2070. But 2070 is pretty far away. And hopefully the species ends before that. But there are a lot of activists who are working on like saving the earth, like even from India. Sadhguru sir, he's saying the save the soil project. Anything you want to say? Ultimately, unless every human being decides that the planet has to be saved, nothing is going to happen. Okay. And the fact is that we are not doing it. The kind of polluting that each of us do, I think it's just not something which can be pulled back, which we can go back on. I don't really think it's possible. We keep blaming the industrialized nations, of course. Their per capita, I think, output of I think carbon is about how much? 4 tons or something like that every year. While in India it's only about half a ton, but still nobody wants to change the lifestyle. Yes. We want to get down right in front of a shopping mall. We will not walk 100 yards. We will not. We will use plastics which are banned because it's convenient for us. We will not make the effort. I mean, I think the human species has refused to learn. Okay. So what is your take on renewable energies that are going to replace? Yeah, so that way I think India's focus that we are shifting to renewable energy in a big way. Mm-hmm. Like we're going to produce 500 gigawatt of renewable energy by 2030.
and 50% of our energy requirement is going to be met from renewable energy. So I think India and Prime Minister Modi is taking a great step. That's fantastic. And this year I think our target for renewable energy is about 180 gigawatts. I think all this is remarkable. So India is making a great effort, switching to solar energy, being the leader of the Solar Alliance. All this is fine, but I really think that the planet is still not going to survive. Okay, sir. Thank you so much. अपना आर्ट गैलरी में आप ग्रुप एग्जीबिशन देख रहे हैं। क्यूरेटर इसका प्रवीण महतो है, जिसमें 24 आर्टिस्ट है, और 5 तारीख को जो इन्वायरमेंट डे है उसी के उपलक्ष्य में सारे आर्टिस्ट का काम नेचर से रिलेटेड इन्वायरमेंट को कैसे ठीक से रखा जाए, कैसे साफ़ सुथरा शहर को रखा जाए, उसी से रिलेटेड सारे आर्टिस्ट ने काम किया है। ओके, अभी मेरी बात हुई चीफ गेस्ट से, मिस्टर अल्फांसो से। उनका जो व्यू है बहुत ही क्या बोलते हैं पेसिमिस्टिक, मतलब वो बोल रहे कि दुनिया नहीं रहेगा। और आपका क्या वो है सोच है इसके बारे में? दुनिया तो रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ। मेरा तो यही कहना है। इंसान का लाइफ जो है ना पृथ्वी पे आना और जाना रखा है, बट दुनिया यहीं रहेगा। बट हाँ, कोई रिसर्च करने वाला और आ जाएगा, फिर उस चीज़ को अलग तरीके से देखेगा। दुनिया तो रहेगा ही। ओके, थैंक यू सो मच उमा शंकर जी। थैंक यू मैम। हाउ आर यू? गुड इवनिंग। Good evening. So how was the show? So we really enjoyed the exhibition. We had a Praveen showed us around, and he has curated the exhibition Under the White Sky. And I liked, the title, for example, is looking at the idea of the sky not being blue. So the whole fact that the sky is white because of the infertility and the pollution and all of that, the clouds are white. And I was just being explained, the clouds, when white clouds never rain. So there is a lack of, rain, there's a lack of fertility, there is so much of pollution. So the show, and today is World Environment Day also, so it is kind of, putting a very important factor out there. And this is something that we are all talking about in the art. And art lends itself very well to the visuals also. They talk about water pollution, or for that matter, the kind of pollution that exists in the soil, or for that matter, the deforestation and endangered species. Also, they have the whole section on that. So I was in the show, and there was chief guest, Mr. Alfonso, and he has a very pessimistic view about the Earth. Mother Earth won't be there, and humanity won't survive. Do you think that humanity won't survive in down to 50 years down the line? The thing is that the situation is looking very bleak right now, and I was speaking to a few people yesterday. I had also gone to the Institute for Arts and Design, and even there they are looking at sustainability as a project. I just did a show recently on sustainability with Desi Art. So we're all looking at the factor, and the thing is that there is a very slim chance that we can make it work. The thing is about our attitude. So if we take a negative attitude, I think that is not going to serve us well. Yes, definitely we have to be very realistic about the factors that we are dealing with, because the kind of pollution we don't even know. The kind of things that are being dumped in the ocean, the kind of waste that is there, the toxic waste, the chemicals that are being washed away into the water, everything is becoming polluted, and people are not even able to drink water, air, all these things are being paid for, which was free, which was something that you didn't have to worry about, we took it for granted. So now we cannot take it for granted anymore, and we have to save our earth, and that is the only attitude which will work. If we want to be alive, having our generations surviving this, because the younger generation is inheriting a very polluted earth, and it's very unfortunate that they're already suffering. So many of them are not able to breathe properly. They are just having inhalers. We have so many young people who have had heart attack and passed away because of COVID. All these diseases that are coming, all these pandemic and everything is because of pollution badly. So we need to change our behavior, only then we will survive. Okay ma'am, World Ocean Day is coming, and I have seen that ocean is being polluted because most of our trade are being done through the seaways rather than airways or some roads. So that is also a factor. What do you think, ma'am?
World Ocean Day is coming. So you're planning for any shows through art. You want to give some message to the world. So the ocean is, again, what is happening underneath the sea. When the camera goes down and you see the kind of pollution that is there in the sea bed, it takes years and years, for that to get eroded and washed away. So we don't even know the kind of pollution that we are causing to the ocean, because we don't deal with it on a day-to-day level. And the people who are in the ocean, that they are doing trading and all of that, that is that is okay. But the thing is, the kind of fishing that is being done, the mass destruction of the natural creatures like the whales, the sharks, shrimp, all of this is being just removed from the sea. There are sometimes, you go to the ocean beach and you see all the dead fish just lying there. That has happened because of the pollution. So these things, we have to take accountability for it, and we have to put pressure on. We could have been happy on World Environment Day, but we have to be a little sad because the environment is not in a good condition, and it is up to us to act now, because now is the only time that is left. After this, the world is going to enter into a phase where everything is going to be in a very, very bad state. Simple things like getting oxygen, getting water, getting food is not going to be easy. And the privileged, they have to take responsibility for what they've done to the earth. So that is something that I hope that this message gets across to them, and all the exhibitions which are happening around the theme of the World Environment Day. Then people take, some cognizance of what is happening, and they change the way that they are treating the earth, and they treat it with more responsibility. Thank you. With the guest of honor, Mr. Rupchan, for the show Under the White Sky. So Mr. Rupchan, आप बताइए कैसा लगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अर्पणा फाइन आर्ट गैलरी पे शो इतना ज़बरदस्त, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? तो ये अर्पणा आर्ट गैलरी के अंदर यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जो कि हमें सबको मालूम है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और परवीन मोहतो जी ने जो है बहुत अच्छी तरह से क्यूरेट किया है, और जो चेतना ग्रुप है तो उसके अंदर जो मिस्टर अनिल सूद हैं उनकी देखरेख में ये जो प्रदर्शनी है, बहुत अच्छे से आपने देखा है कि इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, जिसमें पेंटिंग्स भी हैं, स्कल्पचर्स भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, ड्राइंग्स भी हैं, और इतने एमिनेंट आर्टिस्ट का जो वर्क देखने को आपको मिलता है यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की आपको पेंटिंग देखने को मिली, जो कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखी है, और एमिनेंट आर्टिस्ट खुद अपना कौर जी के अपने आप इतने मैसेजेस छुपे हुए हैं, जो एक कलाकृति में इतने जो एक भाव एक आर्टिस्ट दे देता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक कलाकार के तौर पर एक आर्टिस्ट का काम है कि वो एक मैसेज दे सोसाइटी को, वो किस तरह से वो एक डायरेक्शन दी जा सकती। इसी तरह से मेरा यही मानना है कि जो भी जिस फील्ड में माहिर है तो वो अपना योगदान इसी तरह से लगातार देता रहे। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ परवीन मोहतो जी का, अनिल सूद जी का, और सभी का जिन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे आमंत्रित किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने आर्ट्रागा को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। So I'm with Mr. Mohanty, and today he exhibited his work in a group show. It's called Under the White Sky. So Mohanty जी, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आज के शो के बारे में? शो तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया शो है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लोगों का काम है इसमें। अपने काम के बारे में मेरा बताइए। एक काम है इसमें नेचर के ऊपर है, जैसे कि वो डिजायर है, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है, ब्लैक बक के ऊपर, और एक दो काम है मेट्रोपोलिस। ये बिफोर कोविड मैंने किया था, तो कोविड जैसे आने वाला है, जो लोगों अब एक टाइम आएगा जो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगा, और वो चीज़ मैंने पहले बनाया था। उसमें आप उसी काम में आप देख के फील कर सकते हैं। और बाकी जो ब्लैक बक का जो बनाया है कि जो नेचर को आजकल डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे से काट देते हैं और जंगल आ जाता है, मतलब जानवर सब आ जाते हैं जैसे टाउनशिप में, उनको रहने के लिए जगह नहीं होता है। और ज़रूरी है कि हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन कुछ होता नहीं। कहीं ना कहीं चारों तरफ बिल्डिंग, हर जगह प्रॉपर्टी बेच के लोग बिल्डिंग और जंगल काट के बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनाते हैं।
तो जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हाउ टू सेव आवर एनवायरनमेंट, इसके ऊपर मैंने काम किया। ओके, आपने ये बताया कि हमें ये सब चीज़ें बंद करना चाहिए, नहीं, डिफॉरेस्टेशन। सारा कुछ बंद करना चाहिए। नेचर के एग्निस्ट में जाओगे तो फिर नेचर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि नेचर हमें कुछ देगा। अगर आज की डेट में आप देखो, दिल्ली में अगर इतना टेम्परेचर हो रहा है 49, लोग कह रहे हैं कि इतना गर्मी है, इतना उमस है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका पीछे कारण क्या है? बिल्डिंग्स है, पेड़ पौधे नहीं हैं, और जहाँ देखो वहाँ इंडस्ट्री है, तो आपको कहाँ मिलेगा? सो आप फ्यूचर जनरेशन को ये बताना चाहते हो कि हमें अभी वो हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन को मैं हमेशा ये कहूँगा कि नेचर के खिलाफ मत जाओ। जो जैसा है उसको वैसे ही सेव करो और उसको और कोशिश करो उससे और क्या अच्छा कर पाओगे। पेड़ काटना आसान है, लेकिन पेड़ को उगाना बहुत मुश्किल है। एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता है। बिल्डिंग तो हो सकता है रातों रात बन ही जाता है, लेकिन पेड़ रातों रात नहीं बनता है। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक तो है, है। क्योंकि जो गॉड ने जो चीज़ क्रिएट किया है एनवायरनमेंट, अगर उसके एग्नेस्ट में हम लोग जाते हैं तो भुगतना हमें ही पड़ेगा, ऊपर से और कहीं नहीं है। क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसका कारण हम किसी को कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एक्चुअली चीज़, असल चीज़ में जब रूट में आप जाओगे तो रूट और कुछ बोलता है। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली में मेरा जैसे कि हो गया 25-26 साल हो गया हम दिल्ली में। इससे पहले भी मैं जिन लोगों से बोले, दिल्ली का नाम सुनते हुए दिल्ली का जो सर्दी होता था, लेकिन आज की डेट में सर्दी कहाँ है दिल्ली में? गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली में सर्दी है ही नहीं। जो सर्दी आज से मैं जितना महसूस किया, आज से 25 साल पहले जो सर्दी थी, वो सर्दी आज की डेट में नहीं है। चलो। और गर्मी हमेशा बढ़ते रहेगी। अभी देखो 49 थे, आज की डेट में जून 5 तारीख है, आज की डेट में दिल्ली में आज की टेम्परेचर क्या थी? अब 3 बजे तक तो 44 मुझे अभी याद है, 44, बहुत ज़्यादा है। 45, 3, साढ़े 4 बजे तक अगर आप ये फील करो, आप महसूस करो, अगर 12 बजे इसका क्या टेम्परेचर हुआ होगा। और कोई जगह पे 50 भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम हमेशा इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि कुछ डेकोरेटिव चीज़ बनाने के लिए कुछ अपने आप को पता नहीं कि सोसाइटी में क्या स्टेटस, पता नहीं क्या लोग सोचते हैं। पेड़ पौधे का आर्टिफिशियल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। बिल्डिंग तो अच्छा बना देंगे घर, लेकिन आर्टिफिशियल पेड़ पौधे ये कुछ नहीं होता है उसमें चीज़। जितना नेचर को प्यार करोगे और नेचर के साथ, देखो अगर हम आज कहते हैं कि सांप आ गया या जंगल में कुछ आ गया, टाइगर या कोई भी जानवर घर में आ जाते हैं, वो किसी लिए आ जाते हैं कि उनका घर हम तोड़ते हैं। तो वो उनको जब हम पूरा डेजर्ट बना देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? कल अगर हमारा बिल्डिंग अगर हम कोई डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ट्रू। तो बिल्कुल इसी तरह होता है, क्योंकि एवरी एक्शन के पीछे एक रिएक्शन भी होती है। अगर हम किसी के ऊपर रिएक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन हमें ही भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं भुगतेगा। तो कहते हैं ना, हमने पेड़ पौधे काट दिया, देख कितना अभी क्लीन हो गया, लेकिन हवा नहीं मिलेगी, बरसात नहीं होगी। तो हम एसी लगाएंगे, आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगाएंगे, कोई जाली लगाएंगे, कितना भी कलर करेंगे, उसमें क्या होगा? जो नेचुरल चीज़ है, आपको जो नेचर में रह के आपको जो चीज़ मिलता है, वो आर्टिफिशियल में क्या गेन करेंगे आप? तो इसे एनवायरनमेंट के ऊपर शो है ज़्यादातर। मैं सोशल, जैसे कोविड के ऊपर, कोविड से पहले मैंने जो मेट्रो पॉल्यूशन, दिल्ली जो पॉल्यूशन होता है दिवाली के टाइम पे, जिस तरह पॉल्यूशन हो जाती है तो लोगों को ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर अस्थमा पेशेंट दिल्ली में होते हैं। लेकिन जो कोविड से पहले, कोविड-19 आने से पहले जो चीज़ मैंने बनाया था कि लोग एक टाइम आएगा, लोग घर पे रहेंगे, और वो चीज़ हुआ। और ये भी दिखाया था कि उसमें एक छोटा पेंटिंग आप देखोगे, ऑक्सीजन मास्क लेके, मतलब सिलेंडर लेके घूमेंगे। और जो चीज़ बीच में हुआ था, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो कारण तो वही हुआ ना, लोग कहीं ना कहीं घूमे। और ये भी चीज़ हो गया था कि ATM मशीन की तरह भी ऑक्सीजन आपको रिचार्ज की तरफ से मिलेगा, इसी टाइप का हो जाएगा। क्योंकि लोगों का जो वर्कआउट काम है वो तो बाहर जाएगा ही।
काम के लिए लोग बाहर निकलेंगे, तो उसको आप कैसे आप बिना काम करोगे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे? तब जरूर बाहर जाओगे तो फिकेशन की भी आपको ज़रूरत होती है। ठीक है। ये चीज़ एनवायरनमेंट को हम जितना पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, ऑक्सीजन भी हमें उतना ही मिलेगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो मिस्टर मोमती। थैंक यू सो मच Thank you. आर्ट्रागा के साथ जोड़ने के लिए। थैंक्स सो मच। आई एम विद दुर्गा मैम। मैम इज़ एन आर्टिस्ट। सो मैम, what you want to say about the show today being the World Environment Day, and Praveen has curated the show. So what your take for the show, ma'am? Yeah, I think environmental day, I think this is very important because as a all over the world we think that the whole world has developed, but we have developed in a technological manner, but when you really see the environment, that is lot of trees are being cut, this like whatever it is, like people have to be concerned about nature. And I think when we want to some people want to live near the sea, they want early morning to wake up and look at the sea. Some people want to wake up early and look at nature, but they don't think that to look at the sea from your window, how much of the sea is gone. And when you want to live near the nature, then how much of the trees are cut to build that house. So I think people should be concerned and they should not look out, they should not look for property where they see that they can see the sea and they can see the mountain, because they are the one who destroy nature the most. And this exhibition is again about the environmental, each artist has displayed, and I think there's one artist called Umesh Kumar. I think his work is very good, and Arpana's work again reflect that how cutting the trees almost like murdering a person, because if today we are facing too much of climatic changes, it's because of the environmental has been totally almost being destroyed, especially in cities. When you go to small towns, you see a lot of greenery, but cities have become more like a concrete jungle. And this exhibition displays more of nature, that nature is part of our, I think the way we breathe, nature is also part of our life. So we have to take care of the environment, the trees, the forest, whatever you can say the environment. We have to take the care of environment like we take care of ourselves. Okay. And I think this exhibition does justice to all those things. Okay, so Praveen has done an excellent job as a curator. All the artists who have participated. Yeah. And thank you so much, ma'am, for your message to our audience in Artraaga. Thanks, ma'am. So I'm with a photographer. He exhibited his work in World Environment Day. So I've just checked. It's like a blade and a tree. तो आप अपने काम के बारे में बताएंगे प्लीज़? मैंने जो काम किया है इसमें दो वर्क है। एक है ट्री के सामने बार से जो इस चीज़ को दिखाता है कि हम नेचर के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक ट्री जो ओपन होता है, वो बड़ा होता है, वो ग्रो करता है, उसको भी हम चाहते हैं कि बाहर से एक फ्रेम के अंदर बंद करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसका जो भी इम्पैक्ट हो रहा है हम लोग देख ही रहे हैं। और दूसरा है जो ब्लेड है, ब्लेड वो खुद ब खुद ये बताता है कि वो किस चीज़ के लिए, वो काटने के लिए, तो उसका यूज़ हम उसी तरीके से करते हैं। और यही चीज़ हम नेचर के साथ भी कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। ओके, तो आप किसी फोटोग्राफर से इंस्पायर है अपने काम के लिए? नहीं, सच ऐसा कुछ नहीं, तो आप नेचर से इंस्पिरेशन लेते जो भी है। तो थैंक यू सो मच आर्ट्रागा के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स। हम उमेश जी के साथ है, तो इन्होंने ग्रुप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है अर्पणा और आर्ट गैलरी पे। मिस्टर उमेश जी, आप बताइए शो के बारे में, अपने वर्क के बारे में। ये शो एक्चुअली पर्यावरण पे है, और जो पर्यावरण आज के डेट में जो स्थिति है, जो जनमानस को जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट भी उसको महसूस करता है। तो आज का दिन पर्यावरण डे है, तो उस उपलक्ष्य में ये शो क्यूरेट किया गया है। इसमें 24 आर्टिस्ट है, और मैं अभी 3 ईयर्स से इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वाटर
डैश पॉल्यूशन इक्वल टू लाइफ है। अगर वाटर आपको सही मिल रहा है, शुद्ध वाटर मिल रहा है, जल मिल रहा है, और आपका पॉल्यूशन आपका सही मात्रा में है, तो आपका लाइफ क्या धीरे धीरे क्या कि आपका लाइफ बहुत उज्जवल होगा, बहुत अच्छे सांस ले पाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपका जो पूरे जो एनिमल्स हैं, जो प्रकृति है, वो बैलेंस होगा। उस बैलेंस के साथ आपकी मुस्कुराहट आएगी। अभी आप देखिए पूरा मेटेलिक लाइफ हो गया, पूरा मैटर की तरह। आप घर के बाहर देखते हैं तो पूरा बिल्डिंग दिखाई देते हैं, पूरा बिल्डिंग ग्रीनिश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आपका एनिमल्स देखिए, दिन पर दिन वो एनिमल्स खत्म हो जाते जा रहे हैं। हाथी की संख्या देखिए कितनी कम हो गई है। आप किसी भी चीज़ का देखिए, तो कल ऐसा ना हो कि एनिमल्स जो खत्म हो रहे हैं उनको जार में कल हमको देख पाए। जो कई एनिमल्स खत्म हो चुके हैं, जो हम लोग जार में देखते हैं कि ये एनिमल्स कभी थे, या बर्ड्स की ये कभी थे, तो ऐसा ना हो। आज के डेट में ये हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि इसको वर्ल्ड इस पर काम कर रही है, फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को महसूस किया हूँ, अब न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू मैं महसूस किया हूँ। आए दिन इस सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ आर्टिकल आते रहते हैं। तो 3 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ और बहुत ही सीरियसली इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं 2-3 साल में और इस पर काम करूँगा। और मेरा मानना है कि लाइफ आपका अगर हंसता हुआ लाइफ है ना, अगर प्रकृति आपकी बहुत खुशनुमा हो ना, तो आपकी जीवन भी बहुत खुशनुमा होगा। तो मैं एक आर्टिस्ट भी एक आम आदमी की तरह है, आम आदमी की तरह। तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, पर जो मुझे महसूस होता है, तो मैं अपने रंग ब्रश और कैनवस के थ्रू अपने सोच को निकालता हूँ। एक राइटर अपने पेन से निकालता है, एक रंगकर्मी है वो अपने नाटक से निकालता है, मैं अपने ब्रश से निकालता हूँ, ब्रश और कलर से निकालता हूँ, अपने कैनवास अपने पेपर पे निकालता हूँ। और मैं समाज से जुड़ा हूँ, तो मैं जितना अच्छे से अच्छे समाज तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ रंग और कलर के द्वारा। ओके, थैंक यू उमेश जी। शो बहुत ही ज़बरदस्त था और प्रवीण मांटो ने काफ़ी अच्छा से शो को क्यूरेट किया। जी। और पॉजिटिव मैसेज दिया गया। मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। श्योर। काफ़ी विजिटर इस शो का तारीफ किए और काफ़ी वर्क का भी इसमें लोगों ने बात किया, चर्चा किए। मैक्सिमम वर्क इसमें लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो मैंने देखा इस शो में बहुत सारे विजिटर ने वर्क के विषय में चर्चा किए हैं और उन्हें आर्टिस्ट को बुला के पूछे हैं कि ये आपका वर्क है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे इस एग्जीबिशन में। जैसे मेरे ही वर्क काफ़ी लोगों ने आके पूछे कि उमेश जी कौन है, प्लीज़ मिलवाइए। सो वर्क उनको बहुत अच्छा लगा। एक ट्रीटमेंट है, उनकी कंपोजिशन है और एक डिफरेंट तरह का मैंने प्रेजेंटेशन रखा है। कहीं से किसी का टच नहीं है या किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। एक अपना प्रेजेंटेशन है, अपना क्रिएटिविटी है, अपना ट्रीटमेंट है। तो उसको मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपने वर्क में रखा हूँ। थैंक यू उमेश जी, थैंक्स। I'm with Abhishek Kumar and today I'm in a show. It's called Under the White Sky. So Abhishek, what your call for your work, your sculpture work? It's very beautiful. There's a cloud, white cloud on top of it. So and a diamond is there. So can you please give some message to our audience in Artraaga? Definitely, the message is all about for the nature, because we are the part of the nature and we are destroying that nature. If you see in my work, there's a white cloud, right? So that white cloud refers, if there is no excess blue, there is no darkness, there is no water. So now the cloud has become completely white. So if there is no water, no nature, right? If you see there are the plants I put in my work, so that's only one plant which we can see in the destroyed area. And the diamond which I put over there, that's in 2 parts. One is shining, one is completely destroyed. And there is only one tree or plant, you can say that is the left on the earth. So my work symbolizes like that we are trying to destroy our earth. We are trying to destroy our nature. So we need to stop it and we need to make our earth as beautiful as we can survive, and we can give good thing to our futures as well. So my work is all about that, the nature. Okay, that's a great message to the people. We are facing so much of problem like climate changes, and today I was with the chief guest, Mr. Alfonso. So he has a very pessimistic view about the world. So what's your take on that? See, he is absolutely right. Because as he has the experience of the nature, and his work is all about that only, about the nature for the nature. So this reflects the complete thing which is for the nature. So he's right, completely right on his words.
Thank you, Abhishek. Thanks. Thank you so much. With Mr. Sinha, and he's seen the show curated by Mr. Praveen. So, what's your call for the show? I think it's a wonderful show. Praveen has curated the show on the World Environment Day, today being World Environment Day. He's put up a show of a range of artists which have captured the environment and the challenges that exist, be it through paintings, installations, sculptures, photographs. I know some of them. Gopal is a good friend, Om is a good friend, and there are a lot of good artists whose works have been displayed, including Artraaga whose gallery this is. I really liked coming here. It's good to see such good professional exhibitions put together, and very emotional content. I hope there is a response and an impact to it, and the world is a better place because of this. And art has the power and the ability to do so. Thank you, Mr. Sinha. Thanks a lot for such a lovely message for the World Environment Day. Thank you. So right now I'm sitting with a curator, Mr. Praveen, in Artraaga Fine Art Gallery, and it's a excellent show that I have seen. I have just went through. Mr. Praveen, what is your message through the work? See, there is no as such message. Everybody knows that we are destroying the planet, and there is lots of things happening to save it. Mine is just a small gesture in that ocean. What I am trying to do is just putting up a show to have an awareness on environment and ocean, as the World Ocean Day is also coming on 8. So we are trying to have people to know about what are the problems this planet is facing, and they can try to stop something or do something to save this planet. Okay, so Mr. Praveen, are you doing some shows for the World Ocean Day? Yeah, we are doing this. We're here in the Artraaga. Yeah. So we will be having a talk. I'm trying to have a film on ocean pollution, how we can have a solution out of it. If something like that I get it, I'll definitely share with you also. But there will be a talk on ocean, plus there will be a workshop related to ocean pollution, how we can save it, blah blah, all the related to the ocean, pollution things, pollution, because it's climate change, all those things. And one more thing, that after pandemic we have seen the downtrend of the globalization. It's going through de-globalization. Yeah. So it's like a lot of things have been impact in the businesses, because locally people are becoming more aware, and there's a I don't want to say about like Russian and Ukraine war also, because war doesn't bring anything good to anyone. I think both the parties, if we see it, and it hamper everyone. All the world, even they are fighting, we are also being hampered. Yeah. And so what do you think in that way, through art, what we can do? See, we have been talking to a few Ukrainian artists from India, those who are living in India. We are trying. We did one show with one Ukrainian artist showing the. It was a photography show, which happened in Open Palm. Then this time we are trying to have a performance and photography show with Ukrainian artists and Indian artists. We are trying to have all those necessary logistic done. Then we will have that show as well. That's a nice kind of thing doing through art, inviting a Ukrainian artist, and that will be a great thing to do it in an international level. Thank you, Mr. Man. Thank you very much. Thanks. Thank you.
Safely stay alive. So guys, like and subscribe Artraaga. Thank you.